Okay, so in the last class, what we started off with was digestion, right? We talked about the smooth muscles being the involuntary muscles. We talked about the mouth. We talked about the physical digestion. We talked about the chemical digestion. Uh, Again, let's just give it a quick review. एक बार और whenever we talk about the physical digestion is the breakdown of large molecules of food into smaller ones. Physical digestion के अंदर कोई chemical state में change नहीं आ रहा है. They're going to remain the same. The chemically, the food is going to be the same. For example, if I'm breaking down roti physically, so what's going to happen is it's going to remain roti. उसके अंदर कोई भी polymer monomer में convert नहीं हुआ होगा. केमिकल चेंज के अंदर हमारे पास क्या होता है? इट्स बेसिकली हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट? ओके, लेट्स राइट इट बेटर. इट्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीमर्स इनटू मोनोमर्स थ्रू व्हाट? थ्रू द एंजाइम्स, राइट? फिर हमने बात करी थी कि भाई हमारे पास जो फिजिकल डाइजेशन हो रही होती है, दैट फिजिकल डाइजेशन इज बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ च्यूइंग एंड द टीथ, राइट? बाय द टीथ रादर. वी टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ. हमारे पास टीथ के 3 लेयर्स होती हैं. The outermost layer that we have made up of calcium carbonate is called as enamel. The one under it, which gives it its shape, is a fibrous layer that is called as a dentine. And under the dentine is this layer right here. Oopsie. Right? Is this layer right here. This layer that we have is called as the pulp cavity. This pulp cavity right here is a कैसी वाली layer? It's the sensitive layer. अगर हम लोग देखें pulp cavity के अंदर, we have the blood vessels providing the teeth with oxygen and taking away the carbon dioxide, right? और हमारे पास pulp cavity के अंदर और क्या होता है? Nerves होती हैं. What do these nerves basically do? These nerves basically allow us to assess how much pressure we're supposed to apply on the food. Are we supposed, for example, if I'm eating something that is hard, for example, dry fruits, am I supposed to chew them, let's say, with more pressure? If I'm chewing something that is, let's say, soft, for example, a chewing gum, तो उसके अंदर हम लोग pressure कम लगाते हैं while chewing it. ठीक है? अच्छा. So a better picture of the teeth is going to be here, is right here. ये रहा. So I'm just going to put it right here. तो अगर हम लोग इसको देखें, तो there are a few things that we don't want to know about. So I'm just erasing them, cutting them out. So whatever the cementum is, whatever this preoral membrane is, we don't have to worry about them. बस हमें क्या पता होना चाहिए कि देखो, that part of the teeth which is in the gums, embedded in the gums, that's a root. The part that we can see outside the gum is the crown, right? The first layer of the teeth on the outside right here is a layer made up of the very same substance your bones is made up of. It's called as enamel. Under the enamel मेरे पास ये fibrous layer जो teeth को shape दे रही है वो dentine है, right? और उसके अंदर मेरे पास pulp cavity आ गई. And if you could see, you could see a lot of blood vessels right here in blue and red, right? And nerves as well. ठीक है जी. अच्छा. Up, let's talk about the types of the teeth that we have. सबसे पहले, let's forget the types. Let me ask you, if you were to talk about teeth, how many teeth are present in adult human beings? Like मेरे पास कितने teeth होंगे? वालेकुम अस्सलाम. मेरे पास कितने teeth होंगे भाई? अल्लाह अलावा. A normal human being is going to have 32 teeth. ठीक है? 32. 32. राइट. अच्छा, अब ये 32 टीथ जो हमारे पास होते हैं, दे आर डिवाइडेड इन द अपर जॉ एंड द लोअर जॉ. ठीक है? आधे इधर आधे नीचे वाले जॉ के अंदर. तो हमारे पास अपर जॉ के अंदर कितने टीथ आ जाएंगे? 16. लोअर जॉ के अंदर भी कितने आ जाएंगे? 16. ठीक है? अब अगर इफ आई जस्ट टॉक अबाउट माय अपर जॉ ओनली, इसकी दो साइड्स बन रही हैं, राइट साइड एंड देन द लेफ्ट साइड, right? So we have the right side and we have the left side. Up right side of one jaw के पास कितने teeth होंगे? 8. Left side के पास कितने होंगे? 8. Similarly, if I would come down to the lower jaw,
8 इधर होंगे, 8 ऑन द अदर साइड। ठीक है। अच्छा, अब वेरी गुड आइजा। अब हमारे पास ये टीथ कौन कौन से होते हैं? द वेरी फर्स्ट ग्रुप ऑफ टीथ दैट वी हैव, दे आर कॉल्ड एज इंसिजर्स। ठीक है। देन वी हैव कैनाइन्स। देन वी हैव प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है। अच्छा भाई, हमारे पास ये जो इंसिजर्स हैं, व्हाट डू वी डू विद द इंसिजर्स? वी टेक अ बाइट, राइट? तो हम कहते हैं कि भाई इंसिजर्स आर यूज्ड टू कट द फूड, right? Matlab, if I'm eating something, I'm just not going to stuff it all in my mouth. Well, sometimes that happens as well. But whenever we take a bite of it, we use the front teeth, which are the incisors. मैं बताता हूँ. Canines, which are more developed in the carnivores, they are used to rip the food. All right. Premolars or molars क्या करते हैं? They grind the food. Both premolars and molars, what do? They grind the food. All right. अब इनकी arrangement कैसी है? Grind, crush, same thing, same thing. You can talk about, you can write crushing as well, it doesn't matter. अब इनकी arrangement कैसी है? इस तरीके से देखो. So if I would put a jaw right here for you, right? अब इसको देखो. अब अगर मैं इसको इनिशियली मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, like this, तो ये राइट साइड आ गई, ये लेफ्ट साइड आ गई. ठीक है. अब राइट साइड के ऊपर हमारे पास सबसे पहले दो क्या होंगे? इन सिजर्स होंगे. दिस टीथ एंड दिस वन, राइट? सो ये हमारे पास दो क्या है? इन सिजर्स है. इन सिजर के बराबर के अंदर एक पॉइंटी टीथ आता है राइट हियर. ये हमारे पास क्या है? कैनाइन है. ओके. अच्छा, कैनाइन के बाद हमारे पास दो क्या आते हैं? प्रीमोलर. और आखिर के जो तीन होते हैं वो क्या होंगे? मोलर्स. इफ आई वर टू मूव ऑन द लेफ्ट साइड, वहां भी ऐसी अरेंजमेंट होगी. मेरे पास सबसे पहले क्या आ जाएंगे? दो इंसिजर्स. फिर हमारे पास क्या आ जाएंगे? एक कैनाइन. फिर दो प्रीमोलर. और फिर तीन मोलर्स. और हमारे पास लोअर जॉ के अंदर भी अरेंजमेंट आ रही होगी. सो इफ आई वर टू सेपरेट इट आउट, तो मेरे पास ये दोनों टीथ कौन से हैं? इंसिजर्स. उनके बराबर में कैनाइन. फिर प्रीमोलर, प्रीमोलर. और पीछे के जो तीन टीथ होंगे वो क्या हो जाएंगे? मोलर्स हो जाएंगे. मेक सेंस गाइस? ये वाली बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम सो फार? What do I mean by ripping the food? Okay. Uh, the canines in humans are not very well developed, but in carnivores, right, they are very well developed. अगर हम लोग देखें तो उनके जो canines होते हैं वो ज्यादा sharp होते हैं. I'll give you an example. I'll give an example for a very good reason. One of the reasons my canines are not very well developed is because if I, as a human, eat meat, I first cook it. Why do we cook the meat? To soften it. अब लार्जर कार्निवोर्स को क्या करना है? हमारे पास जो मीट होता है ना, उसके अंदर फाइबर्स होता है. अगर हम लोगों ने देखा, बोटियों के रेशे होते हैं. ठीक है. अब द कार्निवोर्स, दे हैव हुक्ड कैनाइंस लाइक दिस, राइट? दे हैव हुक्ड कैनाइंस लाइक दिस. अब वो क्या करते हैं बेसिकली, ये जो उनके जो कैनाइंस होते हैं ना, एक तो वो फाइबर्स को रिप करते हैं, टीयर करते हैं. क्योंकि देखो, एनिमल्स तो खाना नहीं पका सकते ना. उनको तो रॉ मीट ही खाना है, विच इज वेरी, लेट्स क्या कहेंगे, सख्त. अगर हम लोग, इफ यू कैन टॉक अबाउट दैट, इट्स वेरी हार्ड, इट्स नॉट सॉफ्ट, इट्स नॉट वेरी इजी टू चू आइदर. एंड द सेकंड थिंग इज, द कार्निवोर्स, they practically have to rip the meat off the bones, right? And that's something that requires a lot of strength. तो उनको उस मीट के ऊपर हुक करने के लिए और उनको रिप करने के लिए, टीयर करने के लिए, उनको क्या चाहिए होता है? उनको कैनाइन चाहिए होता है.
डू वी गेट इट मुश्तबा बेटे? Hmm. Tanisha sounds like कुछ लोग are you. Okay. All right. Now let's talk about the emojis, guys. Come on. Now, now that we know all of this, now that we know all of this, अब एक चीज देखते हैं. Ha 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 ha. No wrong emoji. Okay, come back here, come back here, come back here. तो अब होता हमारे पास क्या है? अब हमारे पास होता क्या है? We have this condition where the teeth or the enamel of the teeth starts to erode. What do I mean by erosion? एक चीज देखो, एक छोटी चीज देखो, छोटी सी केमिस्ट्री है. मेरे पास whenever I would have an acid, कोई सा भी acid हो, weak acid or strong acid हो, it doesn't matter. I want an acid. Whenever an acid reacts with carbonate, it gives you two things. सबसे पहले मुझे ये क्या बना के देगा? It's going to give me water, it's going to give me salt that's going to dissolve in water, and it's then going to give me carbon dioxide gas. ठीक है? इसको अगर हमें विजुलाइज करना है तो हम लोग किस तरीके से विजुलाइज करेंगे? लेट्स से मेरे पास एक बीकर है, उसमें एसिड है, और उसके अंदर अगर मैं चौक डाल दूं, चौक इज आल्सो कार्बोनेट. वो जिस तरीके से सोडास के अंदर व्हेन यू शेक देम वायलेंटली फिजिंग होती है, तो इसी तरीके से उस चौक के अंदर फिजिंग होगी एंड इट वुड जस्ट इरोड. वी अंडरस्टैंड इरोजन, राइट? अगर मैं दो चीजों को रब करना शुरू कर दूं, वो वो घिसने लगती हैं बेसिकली. इसी तरीके से व्हाट हैपेंस इज sometimes when we eat, or not sometimes, whenever we eat sugary foods, हमारे पास फूड्स में जो भी शुगर्स होती हैं, फूड में जो भी शुगर होती है, अगर उसको बैक्टीरिया रिस्पायर करेगा, शुगर्स रिस्पायर्ड बाय बैक्टीरिया, दे प्रोड्यूस व्हाट? दे प्रोड्यूस एसिड. द देखो इस तरीके से अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स को या ग्लूकोज को रिस्पायर कर रहा हूँ, what am I giving out? I'm producing water and carbon dioxide, right? बैक्टीरिया जब हमारे पास शुगर्स को रिस्पायर करेंगे, सो व्हाट डू दे प्रोड्यूस एसिड्स, राइट? अब होता है क्या है, माय माउथ इज वन ऑफ पार्ट ऑफ माय बॉडी दैट इज एक्सपोज्ड टू द एक्स्ट्रा एटमॉस्फेयर. सो there's a constant influx of bacteria. There are bacteria present in my mouth. अब now what's gonna happen? इसको देखो. Let's have a look at this particular image. भाई मैंने क्या देखा? I had some chocolate, और वो चॉकलेट ना यहाँ आके accumulate हो गई थी, कुछ उसमें शुगर्स थी, वो कुछ यहाँ आके accumulate हो गई. Now there were some bacteria present. हाँ, everything. Yes, they can respire sugars, carbohydrates anaerobically. Anaerobically respire करेंगे बेटे. Respiration देखो, breathing is not respiration बेटे. Respiration is a chemical process which where carbohydrates or other organic substances such as lipids and uh, proteins are broken down to produce energy. उनको भी तो energy चाहिए. Make sense? अच्छा जी, come back here. अब जो बैक्टीरिया था ना, उसने शुगर को रिस्पायर करना शुरू कर दिया, और यहाँ हियर क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो गया? एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो गया. अब वी हैव enamel, right? We just studied that enamel is made of calcium carbonate. Whenever there's going to be an acid on the carbonates, when acids are going to come in contact with carbonates, वो तो erosion कर देंगे, वो तो CO2 produce करना शुरू कर देंगे. So what's going to happen is हमारे पास wherever in the teeth, जहां ये एसिड accumulate होता रहेगा for a very long time, वहां हमारे पास
एक खोखली सी जगह बन जाएगी। एक खोखली सी जगह बन जाएगी, राइट। दिस एम्प्टी स्पेस राइट हियर is called as a cavity. Any empty space is called as a cavity. देखो बच्चों, जब हम माउथ के बारे में बात कर रहे थे, किधर गया हमारा माउथ? Listen, माउथ ये रहा। तो हम देखो माउथ को क्या कहते हैं भाई? माउथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैविटी बिकॉज इट्स अपेरेंटली एन एम्प्टी स्पेस, राइट। सो दांतों के अंदर जब भी कैविटी हो रही है, वो क्यों हो रही है? बिकॉज we're leaving the sugars there, leaving the sugars for the bacteria to respire. And when the bacteria is respiring the sugars, what's happening is it's creating an empty space in your enamel. Now whenever we're going to consume any food, and if that food is going to touch the dentine, it's going to come in contact with the dentine, uske niche the nerves hain. There's going to be very sharp pain. That sharp pain is called as sensitivity, right? If you guys have seen that Sensodyne ka ad, तो उसमें ad में क्या होता है कि somebody drinks, eats or consumes something that is either hot or either cold, and they touch their uh, jaw, uh, indicating that they're in great pain. ठीक है? ऐसा तो कुछ काम नहीं है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल लाइबा, नहीं नहीं मसूड़ी तो पुणे समथिंग एल्स, वो एडवांस स्टेज है। ठीक है। लाइबा अगर मैं कहूँ कि if I would start respiring anaerobically, लाइबा what I don't produce carbon dioxide and water, मैं क्या प्रोड्यूस करता हूँ? मैं तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता हूँ ना। As humans, whenever we're going to respire anaerobically, we're going to convert glucose into what? Into lactic acid. तो ये तो बाय प्रोडक्ट है, ऐसे कुछ काम थोड़ी है। बात समझ में आई बेटे? ऑलराइट, अच्छा। इस कंडीशन को कहते क्या है? इसे कैविटीज नहीं कहते। व्हाट डू वी कॉल दिस कंडीशन? वी कॉल दिस कंडीशन एज dental caries, right? This called as what? Dental caries. ठीक है। What is dental caries? हमने कहा dental caries is the erosion of enamel leading to formation of cavities that cause a sharp pain। और ये हो क्यों रहा है? When bacteria respire sugars accumulated on the teeth, producing what? Acid. अभी कौन सा वाला acid है? We don't care. ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी। So, अच्छा, अब how to cure it? You basically go for two things. You either go for a root canal if it's severe, or either you go for fillings. इसके अलावा, we're not concerned about the cure. What we are concerned about is its prevention. इसको prevent कैसे करोगे? How are you going to prevent it? Right, brushing. ब्रशिंग के अलावा हम लोग क्या करेंगे? एसिड है ना। So what are we going to use? We're going to use alkaline mouthwash. All right. अगर लिख ले तो डिस्टिंक्शन आ जाती। Okay, right. So here now,
This was all about the teeth. Okay. Okay. Now that we're done with the teeth, what we're going to start off with is we're going to talk about the esophagus. Okay. Start, write it with a U, write it with an E, doesn't matter. ठीक है esophagus है क्या esophagus है क्या esophagus is basically a muscular tube that connects the mouth with the stomach. Oh, I'm sorry. हमने टीथ की बात तो कर ली, but we did not talk about the chemical digestion. Oops. So, oh, we haven't talked about this before. Okay, I'm sorry. So what happened? The teeth, they consist of physical digestion, लेकिन माउथ के अंदर हमारे पास और क्या हो रही है? माउथ के अंदर हमारे पास chemical digestion भी हो रही है. We did not talk about that. I'm so very sorry. So whenever we talk about chemical digestion in the mouth, this chemical digestion is done through a liquid that is secreted by the salivary glands called as saliva. ठीक है? अच्छा जी. अब हमारे पास जो सलाइवा होता है, ये कौन सिक्रीट कर रहा है? इट इज सिक्रीटेड बाय who? द salivary glands. इसकी दूसरी बात हमें क्या पता होना चाहिए कि ये करता क्या है? what are the functions of the saliva? Practically there are two. सबसे पहला फंक्शन क्या है कि it moistens the food. क्यों? Why do I need the food to be moistened? So that it's easier for me to swallow it, right? अब देखो, if I would be consuming something that is dry by nature, or अगर if we're not going to keep it in the mouth for a very long time, या अगर हमारा मुंह dry हो रहा होगा, so if I would try to swallow it, it would lead to choking, right? कभी कभार होता है. Like there are times when I would be eating something dry, for example, some chips or some nimco maybe, and during a football match, things would be intense and my mouth would go dry. So agar if I would try swallowing, let's say that bolus of food that would be dry, तो ऐसा लग रहा होता है गर्दन के अंदर while you're swallowing कुछ एक खिंचन आ रही होती है, right? So what do you do it to moisten the food? You try to drink water over it. तो नेचुरली हमारे पास फूड कैसे वो हो रहा है, मॉइस्चर हो रहा है थ्रू द सलाइवा. Again, why do I need to moisten the food? Why do I need to uh so that it's easier for me to swallow it, right? अच्छा, दूसरा काम क्या है salivary glands का? That the salivary glands contain enzyme amylase, right? All right, guys, focus. So ये amylase क्या करता है? What does this amylase do? So the amylase secreted by the salivary glands is called as salivary amylase. This salivary amylase breaks down the starch molecule in the food into what? Into a disaccharide that we call as maltose. Make sense? ठीक है? Very good, very good. So this was all about the mouth. Do we have any questions? See, no.